The next operation in properties of regular languages is reversal. कि reversal के अंडर भी regular languages are enclosed. अगर आप एक regular language का reverse करेंगे तो भी you will end up with a regular language, and this is proved by again an NFA. क्योंकि NFA सिर्फ regular languages के लिए बनता है, non regular languages के लिए NFA नहीं बन सकता, इसलिए हम ये शो करेंगे कि क्योंकि इस रेगुलर लैंग्वेज के NFA को हम रिवर्स करके एक नया NFA ले सकते हैं और जो कि उस लैंग्वेज का रिवर्स लैंग्वेज देगा. सो देयरफॉर दैट वुड प्रूव दैट योर लैंग्वेज द रिवर्स ऑफ अ लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज. सो आपने करना क्या है कि आपके पास एक NFA है लैंग्वेज L1 के लिए. वी कॉल दैट लैंग्वेज वी कॉल दैट NFA M1. सो L1 का रिवर्स जो लैंग्वेज है उसका NFA को भी कॉल दैट M1 डैश. अब ये होगा कैसे कि यू रिवर्स ऑल द ट्रांजिशन, जो आपका ऑर्डर है आप उसको रिवर्स कर देते हैं. सो ये जो, और इससे पहले अगेन टू मेक अ पॉइंट, इफ़ यू हैव मल्टीपल फाइनल स्टेट्स you have to make it one. How? Again through the procedure studied earlier in the previous part of properties of regular language. आप एक फाइनल स्टेट लेंगे और जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट्स हैं उनसे उनको उसको लैम्डा ट्रांजिशंस के साथ उसको ज्वाइन कर देंगे. सो रिवर्स करने के लिए आप क्या करेंगे? सो यू विल रिवर्स ऑल ट्रांजिशंस. तो आपकी जो फाइनल स्टेट होगी आपकी इनिशियल स्टेट बन जाएगी और इनिशियल स्टेट जो है वो आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी. And this is the process of reversal. So you reverse, and all the transitions in the path will also be reversed. Make initial state, accepting state, and vice versa. So let's look at a concrete example, which is this. So आपकी language L1 है A star B, और जब आप इसका reverse करेंगे तो हो जाएगा B A star. So you see that B A star. So अगर आप इसको प्रोसीजर देखें, ये आपका NFA है which is for A star B. अब आपकी ये स्टार्ट स्टेट होगी, ये फाइनल स्टेट होगी और ये ट्रांजिशन रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन नहीं आएगी, ये स्टार्ट स्टेट बन जाएगी. सो ये बन जाएगा स्टार्ट स्टेट से पहले आपके पास B आएगा और उसके बाद A स्टार आएगा. सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिवर्सल ऑपरेशन. और क्योंकि आपका रिवर्स एक लैंग्वेज के लिए जो NFA है उसका रिवर्सल प्रोसीजर अप्लाई करके आपके पास एक नया NFA आ जाता है एक उसकी रिवर्स लैंग्वेज के लिए, इसलिए जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ रिवर्स. नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस इज डिफरेंट as compared to the previous examples. In all the previous examples we were working with the NFA. NFA को यूज करके हम किसी भी ऑपरेशन को प्रूव कर रहे थे कि वो उस रेगुलर लैंग्वेजेस के अंडर वो ऑपरेशन क्लोज्ड है. दैट ऑपरेशन इज क्लोज्ड अंडर रेगुलर लैंग्वेजेस. दैट ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज. व्हेन यू अप्लाई दैट ऑपरेशन द रिजल्टेंट language is also a regular language, whatever you call this or however you state this. As opposed to that, आपने complement का operation prove करने के लिए you are not going to take a NFA, you are going to take a DFA. अब इसकी reason क्या है? That can be shown by an example, but at the moment let's do this कि आप आप complement लेते कैसे हैं. So the point to remember is for reversal you have to remember that you are taking a DFA. You have to remember that you are taking a DFA and not an NFA. So if this is your DFA M1, this is the reverse which is M1 dash. आप समझ लें जैसे अगर ये आपकी even number of A's का DFA है तो ये odd number of A's का DFA हो जाएगा. और reversal कैसे होता है? जितनी भी आपकी फाइनल स्टेट्स होती हैं वो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स बन जाती हैं और जो भी आपकी नॉन फाइनल होती हैं वो फाइनल बन जाती हैं. सो आपकी ये, अगर आपकी ये एक नॉन फाइनल स्टेट है ये फाइनल हो जाएगी, नॉट नेसेसरीली द स्टार्ट स्टेट, और जो आपकी फाइनल स्टेट्स हैं वो नॉन फाइनल हो जाएंगी. तो बेसिकली आप रिवर्स के जैसा कुछ कर रहे हो लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. व्हाट यू डूइंग इज फाइनल स्टेट्स को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर रहे हैं, बस दैट्स ऑल यू डू. सो अगर जैसे आप सोचो, इमेजिन करो, विजुलाइज करो जो आपका DFA होगा फॉर इवन नंबर ऑफ A's, राइट.
इवन नंबर ऑफ एज को नॉर्मली हम कैसे बनाते हैं, हम दो स्टेट्स में बनाते हैं. सो एंड यू मेक अ साइकिल. सो इवन नंबर ऑफ एज की जो फाइनल स्टेट है, दैट इज आप क्या करते हो, वन ए टेक्स यू टू नॉन फाइनल स्टेट, and the second A takes you to a final state, third A takes you to a non-final state, fourth A takes you to a final state. So that is even number of A's. जब आप उनके states को flip करोगे, final को non-final और non-final को final, तो आपकी first state आपको final पे ले जाएगी और first transition आपकी final state पे ले जाएगी और second transition non-final पे ले जाएगी. So this is how it will be. So I'll upload a handout which will show the procedure of complement. So you please go through that as well after this lecture. So let's look an example. Again, the example we have is A star B. So first part, this is not the NFA, this is a DFA. So NFA वाला part is this much. This is your NFA. अब इसमें आप क्या करते हो, वही again to make it a DFA, you have to see that there should be an outgoing edge from all states for all letters of sigma. So इस state पे अगर आप इस NFA को देखते हैं तो यहाँ पे A की transition है और B की है, so this is complete. इस पे आपके पास A B दोनों missing है, so that will lead out and go to a state from there where you don't have any means of coming back to this state. So this is your dead state, trap state, and at this state you have this loop. So whatever comes here stays here, cannot come back. So the language would be A star B. अब इसमें आपने flipping करनी है. This is a non-final state, this will become a final state. This is a final state, this will become a non-final state. And this is a non-final state, so this will also become a final state. अब क्या होगा? अब इसमें reverse complement के बाद जो आपकी language है, it will accept everything but this. So A star B के अलावा सब कुछ accept करेगा. A star को accept कर लेगा. You see this is accepting A stars only. A star के बाद अगर B आता है तो वो accept state पे नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद अगर A या B multiple B's आते हैं या उसके बाद multiple A's आते हैं और A B and A B repeat करता है, so whatsoever the case is, that is all accepted. So the language of the complement is A B whole star minus A star B. So this is how you do a complement. Again, point to remember is that for a complement you have to use a DFA and not an NFA. You have to show this on a DFA. And then last operation we have is intersection. So we have, what we do is, you have a language L1 and a language L2, and we have to show that L1 intersection L2 is a regular language. Please note that आपके second slide में of this lecture, this is intersection operation is not so visible, so you refer to that slide. Okay, sorry for this. You were at this slide. So we are showing the operation which is intersection. L1 is regular, L2 is regular. We have to show that L1 intersection L2 is also regular. So we'll prove this through De Morgan law. De Morgan law क्या होता है? L1 intersection L2, for example, A intersection B is equals to complement of A union complement of B whole complement. So basically L1 का complement लें, L2 का complement लें, उन दोनों का complements का union लें और जो union आए उसका complement लें, तो आपको L1 intersection L2 language मिल जाएगी. तो अब looking at the previous or remembering the previous slides, आपने देखा था कि L1 का complement भी regular है, L2 का complement भी regular है, L1 complement union L2 complement भी आपको regular मिलेगा. इस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर ऑपरेशन है और रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी में आता है और यूनियन भी रेगुलर लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज में आता है. इसलिए अगर आप इन दोनों प्रोसीजर्स को यूज करके आप डी मॉर्गन लॉ के थ्रू व्हेन यू विल गेट दिस, तो एक्चुअली यू विल गेट दिस. सो दैट प्रूव्स दैट L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज. So let's look at this कि अगर आपके पास A एक regular language है, we are not making the complements or the
union, because we already seen that on other examples कि complement कैसे लेते हैं, we saw that for L1, union कैसे लेते हैं, we saw that for L1 union and L2. So let's say you have this language L1 and this language L2. अगर आप देखें इन दोनों में, this is a new language, this is AB BA. हमारी example में L2 BA थी only. But for the sake of this situation, we are adding a string which is AB. अगर आप देखें इन दोनों में क्या common है, so the only common string is AB, which is this, which falls in this language and this language as well. So इस दोनों की intersection language में ये एक string आएगी, and you can see that this is a regular language. इसका आप DFA या NFA बना सकते हैं AB का, just like you made it for BA. So this is about it. This is about the properties of regular language. Please go through both these lectures. I'll shortly announce a quiz for these two. Please don't worry, you will have ample amount of time to study for it. That's it.